Hi guys, I'm Sean. This is Alyssa. Gus is in our hearts, and this is Internet Rabbit Hole Daily. That's right, folks. Your eyes don't deceive you. Alyssa is truly back. Yes. She's still a little bit jet lagged, a little bit tired, but you know, she's dedicated to her job, and plus we had to celebrate India's success here. So you might still see a few reactions with just me while we're sort of easing back into things, but we are so happy to have Alyssa back. And what do you have to say, Alyssa? It's good to be back. And the moon landing very much interests me. Yeah. Did a little bit of research. Yeah, you're going to know more than I know. Now, I'd reacted to a video previously about this, but these ones are a lot meatier here. So we've got two. And I'm thinking that we'll check out both of them, but we'll check them out in different reactions. Yeah. So this first one, as I understand it, sort of leads all the way up to the landing, but doesn't feature the landing. So this is going to give us some more information. It features Dhruv Rathi, which I know some of you aren't big fans of, but you know, we're going to check this out because, you know, 8.6 million people can't be wrong. A lot of people have been watching this one. And so we're going to check this out, and then we'll check out a news story about the successful landing. So the landing's not in this video? No, I think this is just going to sort of set the stage. And you know, it's like, so 18 minutes of anticipation? That's right. Yeah. Okay. I'm excited for the landing. I'm like, I want to see it. I saw some photos of the moon, but not the landing, because in the article it had photos of the moon. So I was like ready to see the Well, I'll tell you what, you've waited a whole day. You can wait 18 more minutes. Okay. All right, here we go. Get into this then. 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। Sorry, I'm gonna have to make the window smaller because I can't see the subtitles. This is, but I appreciate this because it's going to be sort of giving us more context, and then we can appreciate it even more. Yes. Yeah. नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। What year was that? That was 2008. स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली मून पर मिशंस भेजे जाते हैं। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया के द्वारा भी कई लूनर मिशंस प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नजर है इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 का मिशन करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया? Yes. आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch I think that was the one I reacted to, maybe. Chandrayaan 3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. मून मिशंस यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस 5-6 अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। साल 1950s में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किए थे, और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव होती गई है, इन मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती गई है। सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशंस। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में जो चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के चारों ओर ये गोल-गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से he said there's 3 different missions. Well, he was saying there's like 5 or 6 different types of missions to the moon, and so this is just one of them, like just a flyby. I guess you just sort of fly by, take a few pictures, and that's about it. But yeah, and I suspect the most advanced and the most difficult is the ones where you land on the moon. Yeah. Do you think there's going to be some rich people, some company that does flyby? There's been talks about that for like- years. What's it called? Like a moon vacation? Yeah. What's the word? I can't think of the word I'm thinking of. Like a Tour, cruise. a flyby, a tour of the moon. A moon cruise. Yeah. You could just kind of look out the window while you're sipping your daiquiri. Yeah, I don't know. I think that's like a how ways they away. went to the Titanic, but that didn't go so well. Yeah. so Hopefully they learn from that unfortunate They're gonna make incident. it like a ramshackle spaceship. Yeah, that's controlled with Like, oh, like use a this cheaper PlayStation material controller or and- something. Yeah, I don't think so. I think it's just so logistically challenging to go to the moon. And, that's why so few countries have been able to do it. So I think we're a long way from the average everyman, being able to do something like that.
के बगल से निकल जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत Was the यूनियन के द्वारा Russians, लॉन्च किया yep. गया था Oh, okay. जनवरी 1959 में, Sputnik? जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 Oh, Luna चांद 1, के sorry. बगल से गुजरा था। इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायनियर 4। इनका मकसद था दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है, तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो देखने को मिलती है करीब से। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये पहली फोटो मून की दूसरी साइड की ली गई थी, जो डार्क साइड होती है मून की, जो धरती Yeah, it से looks हमें so normally कभी strange because we दिखती never नहीं। see it. आज के दिन Yeah. फ्लाई बाय मिशंस तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा हो। लेकिन चांद को ही अगर स्पेशली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी मिशंस की, जिन्हें Oh wait, are they orbital saying when they're missions doing a बुलाया- different mission, they Yeah, just so this happen is- to photograph it while they're doing something, or they go over there while they're doing something else, sort of? Well, no, I think it that what it was specifically was saying? going there to take a picture. So the first one was they just kind of fly Specifically past the moon, examined. and now I have a feeling this one might get into its orbit a आज के little दिन bit. फ्लाई बाय मिशंस तभी किए जाते हैं This जब is today. Flyby missions are done only के when the रास्ते में चांद moon दिख- is on the way to some other mission. That's what I meant. It's like Okay. on the way, so then they. Oh, okay. Yeah, I see what you're saying because you might as well sort of, you know, Yeah. take a look while you're on your way to Mars or something like that, right? Yeah. Okay, that makes sense. Okay, what happened to the window? Oh. I don't know. I had it Is lined OBS up. still working? Wait. Let me use the mouse. Yeah, it's. Yep. Okay. Sorry, it went from full screen to not full screen. Sorry, you're gonna have to fix it. लेकिन चांद को ही अगर स्पेशली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी मिशंस की, जिन्हें ऑर्बिटर मिशंस बुलाया जाता है। इसमें Orbiter. स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। टिल डेट 40 से ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशंस हो चुके हैं और आज के दिन तक ये मोस्ट कॉमन मून मिशन का टाइप है। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 साल 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इंपैक्ट मिशंस की। ये मिशंस ऑर्बिटर मिशंस का ही एक Impact. एक्सटेंशन Do होते they हैं। throw यहाँ something main at it and spacecraft चांद test के अराउंड it? ऑर्बिट करते रहता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए इन मिशंस को इंपैक्ट मिशंस बुलाया जाता है। आप पूछोगे ये क्रैश लैंड कराने का क्या तुक बना? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। क्रैश लैंडिंग करने तक का जो समय है, जब वो चांद के करीब करीब आए जा रहा है, उसी समय में काफी सारी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स ली जा सकती And है। they can. इसलिए इंपैक्ट मिशंस भी काफी यूजफुल होते हैं। चंद्रयान 1 हमारा एक And those ratings are getting sent to the other craft before it crashes. Yeah, I guess so. It's like gathering all the information, sending it back, and then now So they purposely have an impact mission. There's gonna be a lot of garbage on the yeah, moon. a lot like, of just like I guess how many man-made people like you said there's been impact 40 craters. did you say was it 40 impact Yeah, missions yeah. or was that orbit missions? I think it said 40 successful, and yeah, I'm not. that could have been the orbit ones, Yeah, but yeah. I don't know. But If there's like 40 crashed things on there and it just keeps getting more and more and more, like it's just gonna be I would say though that the moon is pile of already debris. really pockmarked, so I don't think because it's been taking debris for a few well, million but years does now. the so. debris just go in the atmosphere then? Or just know. stays on the moon? Yeah, Just that's a like good all this question. Like, metal? is there all this like metal material? Yeah. Now, what I heard was that when they did the Apollo 11 and they landed on the moon, they set up sort of some devices to read, sort of like if earthquakes happen, it sort of can measure that and that. And when when they smashed something into the moon, it actually resonated for a really long time, which was very surprising. Which suggests that the moon is actually more porous on the inside. Like it has hollow chambers and such, which anyways, that's neither here nor there, but very cool. इंपैक्ट मिशन था। जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है उसे मून इंपैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था चंद्रास ऑल्टीट्यूडनल कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता था। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग्स लेता रहता था जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था क्रैश लैंड करने के लिए। और इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चला कि चांद की एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। मून that's when they इंपैक्ट found out क्रैश about the करता है water. शैकल्टन क्रेटर पर Oh, जाकर। Shackleton. चांद पर ये क्रेटर है जो चुना गया था और जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट।
चंद्रयान 1 Named में एक after a great ऑर्बिटर भी था जो explorer. अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बिना मून इंपैक्ट प्रोब लॉन्च भी नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। जब मून इंपैक्ट प्रोब जाकर क्रैश लैंड किया चांद पर, तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी Wow, हवा में that उड़ी। answers your उस question. मिट्टी को, उस लूनार सॉइल को एनालाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट ने, और इसी एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशंस की, लैंडर मिशंस। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग I करने के just लिए। worry a little bit about them messing around with Mother Messing Nature. around with the moon. Yeah. Knock it out of orbit just a little bit or something. They're like the moon's gonna get pissed off one day Ah. and fight back. Well, you know, like I said, I mean, you can rest safe in the fact that it's being, you know, that all sorts of other space debris, natural space debris is. What if they accidentally, I littering don't know, its put a big surface, so- hole in it or mess something up, and then we have an issue? We don't have a moon anymore. It's just we know the moon affects the waves, Yeah. the tides. Yeah. Like, well, what if this affects the tides and there's like a big tsunami and it doesn't go well? I don't know. Do they know what they're doing? you know, I think there's a lot of smart people that have thought through these things, but you know, good point. क्रैश नहीं करना, आराम से उतारना है। There you go. ताकि This चांद this is पर what you लैंड can कर get सके behind. कोई Then no हिस्सा। crashing The on soft this one. land. जो हिस्सा लैंड करता है There उसे you यूजुअली go. लैंडर कहा जाता है। ये Nice करना and smooth. बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ट्राई करी ये करने की, तो पहले 15 अटेम्प्ट्स Yeah. में वो They फेल tried रहे। 15 15 अटेम्प्ट्स times. मायने रखता है। साल 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है एक बार फिर से Soviets. सोवियत यूनियन के Yeah, द्वारा। they were Saw just that sort in of my kicking research. butt, weren't they? मिशन के द्वारा दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी ये मून पर, और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटो भी खींची चांद के सरफेस की। ये फोटो कुछ ऐसी दिखती है, ज्यादा हाई क्वालिटी फोटो। The first photo of the surface looks like shit. Sorry, but weren't we talking about though? Looks like shit. When the Americans landed Yeah. on the moon, Yeah. and did the Soviets before them? No, the Americans. So the Americans were were the first. Yeah, the first people on the moon were. Were there Soviet people Americans. after the American people, or has there only been American people You on know, the moon? that's Where's a the really American good question. flag? Is it not there anymore? It is. Yeah, it's up there. Okay, how did they land? How did they do a landing back then? Is it because it was on the north side of the moon and they just haven't been able to do a successful like south side landing? Because Well, like I- that was so yeah. many years ago, and it seems like they haven't been able to get it right. They failed Yeah. so many times. Like how were they able to be successful? And was that the first attempt, like the people going, and then Yeah, I mean, they, you can't. didn't mess up somehow? Well, I and- think the first thing they did is they sent John Glenn into orbit, and so they to sort of prove that a human could do well. And before Wait, that, so they the were sending like astronaut- monkeys and dogs and cats. the and, astronaut was just like He in was his hanging little out there, in his yeah. little suit, and then he came orbiting. back. Well, no, he wasn't in a suit. He was in a capsule of some sort, and then he came back to Earth. And then it's like, okay, we've proven that we That's can do that. sketchy. Now How'd he let's get get these back? guys to the moon. to the ship You know- once he was in orbit. How Well, did he get he- him back? Did he have I like a suppo- string or something? I suspect he was in the ship, circling the Earth, and then came back down again. and then the somehow. ship left the orbit. Yeah, and then it sort of came back How down did to they Earth again. set foot on the moon? It's kind of hard to believe. I don't know. I don't know if it's Oh, fully Jesus real. H. I don't Oh, know. Stop it. seems complicated. You're gonna get punched in the face by Buzz Aldrin here. All right. के वीडियोस देखकर दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट आता है इसी फील्ड में अपना करियर बनाने में, एरोस्पेस और रॉकेट साइंस, लेकिन आप जानते नहीं कि एग्जैक्टली ये कैसे किया जाए, क्या इंडिया में पढ़ाई की जाए या अब्रॉड कोई यूनिवर्सिटी ढूंढी जाए, कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सबसे ज्यादा Is सूटेबल this an ad? कौन से Yeah, I don't know what happened. All of a sudden we switched into talking इन about सवालों के Well, जवाब you के लिए know. एक बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन We should let the ad play. Yeah. किसी महंगे करियर 'Cause I like ChatGPT. हैं जो कि Yeah. अक्सर वैसे भी आपके पेरेंट्स I think we know enough about this. Okay, fine. Go to Javrathi's Yeah, description. check out the original video, guys. All right. Here, skip Master ahead. Chat GTP Student Special Course. There's the link. I think that's Full so. course. Coupon code MOON42 for 40% off Ooh. discount. I gotta agree that Offer anyone. only valid for the first 400 people. I'm sure that's not valid anymore. Sorry. There's only been 8.6 million views now of this video. Probably ran out of coupons, but let's just get you gotta back be using to the space ChatGPT stuff. if you're a student, guys. It's very important. Long commercial. Yeah. Well, you gotta इस make your QR money. कोड को स्कैन करके मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और जो लोग आप में से फुल कोर्स खरीद इस वाले QR कोड में है, और ये अभी तक लिया है उन्हें बहुत Okay, we're still going. आमतौर पर ये जो ज्वाइन कर सकते हैं।
अब टॉपिक पर वापस Ah, आते there हैं। we go. आमतौर पर ये जो लैंडर्स होते हैं ये काफी बल्की होते हैं, बहुत ही Bulky. हेवी और बड़े बड़े होते हैं। तो ये चांद पर लैंड करके बस रुक जाते हैं वहीं पर, हिलते नहीं उसके बाद। अगर वहां चांद के ऊपर जाकर हिलना है, मूव करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगली कैटेगरी आती है मून मिशंस की, जो कि है रोवर मिशंस। रोवर्स ये छोटे से रोबोट्स होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाए। रोवर्स की मदद से very cute. डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है चांद के सरफेस पर। पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर भेजा गया था नवंबर 1970 में। और गेस कर सकते हो कौन सा देश था यहाँ पर? एक बार फिर से सोवियत Oh. यूनियन। इसके बाद आखिरी Didn't know कैटेगरी that. होती है मून मिशंस की, ह्यूमन मिशंस, जहां पर इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है और रोवर की जगह इंसान अपने पैरों का Oh, इस्तेमाल here we करके are. चांद Here की we जमीन are. पर कदम रख। How did they land on there? Well, I mean, you can watch entire, sort of skipping all 30-hour over. documentaries He's, like, that explain skipping it all in, over the in process. great detail. He's skipping over. And I have looked Human into the missions, moon जहां mission. पर It did इंसानों को indeed लैंडर में occur. बिठाकर The humans are put in those rovers, and then they walk out of it. I think that's what he said. The rovers just land. No, They land in a Or do they capsule, as rover? I understand it, and then they get out of it, and then they have like It says a. humans are put in landers. पर उतारा Yeah, yeah, जाता the है। landers. Landed रोवर on की the जगह moon. इंसान अपने There you go. Instead See, of a humans rover, use their feet. humans They- use their feet. का इस्तेमाल करके Just चांद incredible. की जमीन And पर there's कदम रखते gravity हैं। there? ये एक ऐसी चीज थी Yep. जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन Not से as much पहले as here, कर दी। that's for sure. 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम That's a रखा। real photo. Yep. How'd they get that? And you, well, because the other guy was taking a picture of They him. just Probably take like, but The photos, the camera works sure. in those conditions. Oh yeah, absolutely. And you can see there on the or on the flag, they've So got weird looking. a metal pole at the top there because there's no wind on the moon. But so, this flag, like it looks like a green screen almost behind the flag. yeah, all right. Don't okay. you think? No, I don't. And doesn't he look like? Doesn't this look a little bit like a green? Okay, maybe a screen? little bit, but it doesn't I'm mean not that saying that's it's the not case. real. I'm just saying it Stop like it. looks kind of weird and Yeah. green screeny. Well, there's a lot of people who don't think that the moon landing happened. So they think it was maybe Well, filmed on a sound I stage. think it would be and, really hard to pull yeah. off it, like not like faking it. Oh, so of I'm not course. saying it's not real. Yeah. It's just peculiar Yeah. kind of like I just want to know all the details and how. Okay, so it Well, seems it's like a tremendous achievement. Yeah. whatever happened here though seems to be different than the Chandrayaan 3 lunar landing. Like the Chandrayaan 3 is on the south side. It must be obviously way easier to land on the north side. And then they just went in that like lander thing and then walked out of it. Sure. But why haven't there been more humans? Well, because landing of the on the cost, the difficulty. I mean, you're The putting risk, I humans' guess. life at Yeah. risk every They don't time really you do need to something go like there. this. If they have machines to do and take samples, they don't Absolutely, really need you the don't humans necessarily to need do the it. human. You know, a big part of this was that they wanted to one up the Russians. We were, you know, right in the midst of the Cold War. There Mm-hmm. But was that flag's got to be all tattered and yeah, it's not I going think strong it by might this have point. have Fallen been off. knocked down or something. I'm Yeah, not sure. I don't think it's still But there. there's so many people that have done entire videos on just that flag and why either it proves people did go to the moon or whether it proves people well, if didn't. it's there, or- then it proves they went You'd there. think so. Unless a machine just put it there. But exactly, yeah. Okay. You know, नासा के द्वारा आखिरी Silliness. ह्यूमन मून मिशन भेजा गया था साल 1972 में। तो तब से There you लेकर go, अब that's तक what I किसी ने thought. चांद पर कदम नहीं No रखा। so one they did stepped two up. In missions, I total, believe. सिर्फ So- 12 3. लोगों ने ही oh चांद wow, की जमीन only 12 people and all Americans. Yeah. Okay. पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के थे। एक सवाल आपके मन from में यहाँ पर NASA, आएगा yeah. कि पहला रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद किया गया, ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन मिशन के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग करानी काफी थी, लेकिन रोवर मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे एक रोवर को डेवलप किया जा सके। और ये नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के 1 साल बाद ही हो पाया। चंद्रयान 2 का मिशन यहाँ पर एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद पर उतरता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 6 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब उतर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी Guessing कर it रहा wasn't था, वो soft. अचानक से जाकर क्रैश लैंड कर जाता That sucks, like all that equipment just destroyed. That's a lot of effort to see go up in smoke. लेकिन But they इसरो ने learned from कभी it, इस right? रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया और इस चीज को लेकर इसरो को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था क्योंकि उस पॉइंट ऑफ They टाइम didn't give up. इसरो बहुत ही हाईली ट्रांसपेरेंट रहा था, सब चीजें पब्लिक को रिवील करता था,
कब क्या सक्सेसफुल हुआ, कब क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। कई महीनों तक इसरो ने यह भी क्लेम किया था कि जो लैंडर है वो इंटैक्ट है, टूटा नहीं है, बस मून पर टिल्ट होकर गिरा हुआ है। लेकिन फाइनली जब प्रेशर बढ़ा तो 1 जनवरी 2020 में जाकर इसरो के चीफ ने आकर एडमिट किया कि लैंडर एक्चुअली में क्रैश करके चकनाचूर हो चुका है। इसरो के मिशन कंट्रोल What, सेंटर they पर didn't स्क्रीन से they didn't दिखाया कि admit it विक्रम before? I don't understand Yeah, what happened. it sounds like they weren't I thought he said quite they were given the being full truth. I thought he said they were being fully transparent. They weren't being? It sounds to me like they were being fully transparent in certain ways, but maybe not all the way, and they just kind of kept that just a little bit of a secret there. Because there's a it's a bit. Well, everyone knows it crashed. There's no hiding that. Well, Oh, it finally admitted that it yeah, was but like maybe it was in intact, like they a million said. pieces. Yeah. Well, Like, anyways, oh, we crashed, sort of, but it wasn't they as bad came crash clean as it could have eventually. They been. came clean. We're good. जब उतर रहा था तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है जब वो करीब 2 किलोमीटर ऊपर था सरफेस से, और जब वो करीब 335 मीटर ऊपर था सरफेस से इसरो कांटेक्ट लूज कर जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग 400 मीटर ऊपर पहुंचने तक विक्रम को अपनी ऑलमोस्ट सारी वेलोसिटी खो देनी थी, लेकिन 1 किलोमीटर की हाइट तक भी विक्रम की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आवर थी और हॉरिजॉन्टल Going way वेलोसिटी too fast. 173 किलोमीटर पर आवर। इसरो के अब जो करंट चीफ हैं एस सोमनाथ, वो बताते हैं कि विक्रम के इंजन में प्रॉब्लम थी। असल में टोटल 5 इंजन में से एक थ्रस्ट थोड़ा ज्यादा था, जिसके कारण विक्रम अनस्टेबल much हो गया। thrust. असल में विक्रम for को just one of them, फोटोज though, from लेकर the size डिसाइड of it. करना था कि एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट क्या होगा, लेकिन फोटोज लेने के लिए कभी वो स्टेबल हो ही नहीं पाया। जब उसने अपनी डायरेक्शन करेक्ट करने की कोशिश करी तो थ्रस्टर्स के मिस अलाइनमेंट की वजह से Yeah, वो I had तेज no तेज idea घूमने what लग गया। caused और यहाँ that विक्रम के crash. सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट लगाई गई थी कि वो कितना तेज घूम सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अक्यूमुलेट हुई और इसी की वजह से अल्टीमेटली जाकर विक्रम क्रैश लैंड कर गया। हम अभी इतना ही जानते हैं। अब चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो उसे लॉन्च किया गया है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 नहीं कर पाया पूरा। कुछ गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए काफी सारी मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। पहले तो जो लैंडिंग एरिया है उसे और बड़ा कर दिया गया है। जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाय 500 मीटर का पैच था, वहीं इस बार चंद्रयान 3 एक 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर Wonder why it ever had to land in a smaller patch. ये पिछली बारी से Just ऑलमोस्ट whatever it 40 could गुना बड़ा calculate or एरिया है। something. दूसरा, चंद्रयान Yeah, 3 maybe. में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बारी ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किए गए हैं ताकि विक्रम ज्यादा तेजी से घूम running a पाए new अगर version जरूरत of पड़े। Windows, और चौथा, इस बारी विक्रम को सिर्फ फोटोज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग करने के Video? लिए। चंद्रयान 2 का जो they मिशन already था had the उसे landing आधा place, सक्सेस बताया जाता है। squared आधा away from. सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में जो भेजा गया ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन तक वो चांद के अराउंड गोल गोल घूम के ऑर्बिट कर रहा है। तो चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली हैं उन्हें इस नए विक्रम में फीड किया गया है They're ताकि using इसकी the old landing one की to जगह give से it the decide करी photos. जा सके। Yeah. और विक्रम लैंडर का जो डिजाइन है चंद्रयान 3 में वो मोर और लेस सेम है चंद्रयान 2 से, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। जैसे कि इसके जो पैर हैं वो और मजबूत बनाए गए हैं और ज्यादा सोलर सेल्स लगाए गए हैं And इस they पर, control और all sensor this जो from हैं वो Earth? Yeah, how cool is that? चंद्रयान huh? 2 की तरह चंद्रयान Crazy. 3 का भी मिशन ऑब्जेक्टिव वही है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और एक रोवर उतारना। अब जो लैंडिंग की साइट है वो 70 डिग्री साउथ है, जहां पर कई सारे क्रेटर्स मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं, वहां पर कभी कोई धूप नहीं पड़ती और इसलिए माना जाता है कि उन क्रेटर्स के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है। यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि जब रोवर उतारा जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा चांद पर तो उसे सिर्फ एक लूनार डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक Which I think is like 13 human days or something. एक लूनार डे 14. धरती Oh, के 1 करीब month. Okay, एक so महीने twice as जितना long as I होता है, thought. मतलब 2 हफ्ते का One दिन। lunar day. Oh, what? Yeah, so In one. the article, I swear it said they'll be there for one lunar day, which will be like 14 days. Yeah, I was sort of confused too, but according to this, it's It 29. is like So 2 now we know. weeks of day and 2 weeks of night. Ah, wow. So it's actually a month. We're learning all sorts of stuff from this video. बहुत This देर is रात good. समझ लो। तो उस हिसाब से जब मून पर लैंडिंग का समय आएगा 23 और 24 अगस्त के अराउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चांद पर लैंड करेगा और तब से सिर्फ 14 दिन का ही समय मिलेगा रोवर को। Okay, so maybe that's where I got the information 14 देने के लिए। day क्योंकि चंद्रयान 3 में Oh, what this is is it? before it's landed. Oh. Oh, this is like the total time. Once it's landed, it's 2 more weeks, I guess, right? Okay, okay. It was like, oh, it'll be like until it won't land until this day. And then once it lands, Ah, it'll okay. be there maybe for 2 weeks. That's why the article said that. Okay, okay. इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूनार नाइट्स के लिए नहीं बने। जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत बहुत So they're only there for the days. -232 Oh! डिग्री सेल्सियस तक What? टेम्परेचर नीचे जा सकता है। तो इतनी Yeah, ठंड में good luck कोई living there. इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे।
इसलिए हमारे इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी लैंडिंग तब हो जब चांद पर सूरज निकल रहा हो। तब से लेकर हमें 14 to 14 से 15 days. 15 दिन Okay, का this समय makes मिलेगा sense काम now. करने के लिए। और अगर लैंडिंग 23-24 अगस्त के राउंड नहीं हो पाई तो हम एक और महीना वेट I'm करेंगे। curious what consists of the lunar day. Is it rotating? Okay, so it says here a lunar day is the period of time for Earth's moon to complete one rotation on its axis with respect to the sun. सितंबर में लैंड करवाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो विक्रम लैंडर का वजन है करीब 1750 किलो और रोवर का वजन है करीब 26 किलो। रोवर का नाम एक बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया है। टोटल में 3 मॉड्यूल्स लगे हैं चंद्रयान 3 में, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का मकसद तो आप जानते ही हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का यहाँ पर मकसद है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालना और चांद की तरफ भेजना। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ही ये लैंडर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में आएंगे और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब उन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और उसे ही दोबारा से यूज किया जाएगा। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो भी चांद के अराउंड 3 से 6 महीने तक चक्कर गोल गोल लगाते रहेगा, मून के ऑर्बिट में ही रहेगा। उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। What was going to happen to the other machine? प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसका शॉर्ट फॉर्म शेप। ये छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा स्पेस में। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, LIBS और APXS। LIBS का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी का केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करेगा कि कौन कौन से मिनरल्स चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरा APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों के लिए यही करेगा। जब प्रज्ञान ये काम करेगा तो विक्रम लैंडर उसकी कुछ फोटोज भी खींच रहा होगा और ये फोटोज हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है अगर सब कुछ सही जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही जाए। विक्रम लैंडर पर खुद 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पहला है रामबा, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और जो गैस उससे रिलीज होगी उसे एनालाइज करेगा। दूसरा है चेस्ट, फुल फॉर्म चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा, कितना तापमान है साउथ पोल में मून के। तीसरा है इल्सा, द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि मून पर कितने अर्थक्वेक्स होते हैं, उन्हें अर्थक्वेक्स नहीं कहा जाएगा। Oh no, did they miss me making the joke about the moonquake? Because स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। और चौथा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नासा की देन है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये लेजर के जरिए धरती से सिग्नल्स बाउंस करेगा। इसकी मदद से साइंटिस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर का। This is just like a lot for my brain. Like, It's a do you lot think to we take know in. enough? it's Do you think we could just like watch the moon landing? well, there's 2 more minutes. I can't. Finish sit it out. still. Finish I it out. can't. All right. Well, I'll tell you what. I'm, You like, really, you look around like, and I'll tired, finish but I'm it like here. restless now, and I just like Just give can't it a second. retain any of this information. Stop it. चांद Just की we'll see range what क्या है? happens here. क्योंकि 5 और I ऐसे know retro enough. reflectors All right, well, I already don't, चांद so पर go on. मौजूद हैं। तो Hold on. एग्जैक्ट डिस्टेंसेस पता लग We're पाएंगे so हमें close. चांद पर। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करके टोटल में 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं चंद्रयान learning how 3। awesome इन 7 the इंस्ट्रूमेंट्स को 7 पेलोड्स भी thing कह is. सकते हो। पेलोड शब्द अक्सर इनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अलावा यहाँ पर प्राइड का भी सवाल है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। इंडिया Well, it'd be चौथा great देश बन victory for the जाएगा world, I'd say. सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ये चीज वैसे 2019 में ही हो जानी थी अगर चंद्रयान 2 का वो वाला हिस्सा मिशन का फेल ना होता तो। वैसे चंद्रयान 1 का जो इम्पैक्ट मिशन था उसकी मदद से इंडिया ऑलरेडी 5वां देश बन गया था चांद के सरफेस को टच करने वाला। सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी यूरोप के बाद। तब से लेकर अब तक 4 और देश इस चीज को अचीव कर चुके हैं, चाइना, इजराइल, लक्समबर्ग और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन देशों ने ये किया 2009, 2019, मार्च 2022 और दिसंबर 2022 में रिस्पेक्टिवली। चंद्रयान 3 के बाद हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी का अगला बड़ा प्लान है गगनयान।
एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में ले जाया जा सके। ओरिजिनली ये प्लान किया गया था कि 2022 में ही हो जाएगा, लेकिन इस मिशन में काफी डिलेज देखने को मिले हैं। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 में इसे किया जाएगा। मून मिशंस की बात करी जाए तो रशिया का जो लूना 25 है वो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये क्रैश हो चुका है। Yeah. तो ये वाला Sort of a मिशन race फेल रहा between the रशिया की Russians तरफ and से। the Indians from the अमेरिका का sounds of it. आर्टेमिस 2 भी प्लान्ड है नवंबर 2024 में, जब इंसानों को मून के पास ऑर्बिट करने के लिए भेजा जाएगा। वो लोग जो इसमें जाएंगे वो अभी तक का फर्देस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे स्पेस में। और आने वाले सालों में चाइना भी प्लान कर रहा है चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको स्पेस में दिलचस्पी है तो यहाँ क्लिक करके there you go, Hey, we're Alyssa. gonna like this. प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। You made मैंने it कई वीडियोस through. बनाए हैं अपोलो 11। Aren't you ब्लैक glad you होल्स you stuck around an extra 2 minutes My there? brain. My brain. Like I said, she's still a little bit tired, a little bit jet lagged. But hey, we know a lot more now than we did coming into it. We know there's Okay, I 7 want to different watch types the of. landing. All right. Well, So if you let's guys sign want to off. watch that landing, Thank you, then guys. Click that like button. Click the subscribe button. Make sure you watch our video of the landing that we're gonna watch next. Yeah. Can't wait. We love you This a whole is lot. Irish This is Daily Gonna Sign Roll Up. the Irish Sign Love you Up. guys. Bye. Bye, guys.